इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय IEPFA, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, एम्पावर्ड इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर। सुरक्षित कल के साथ साथ एनपीएस आज आपको एक नया आत्मविश्वास भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। कॉपीपुर गांव के कॉपी कुमार, कॉपी करने का वे इनको बुखार। बादशाह, शहनशाह, चुलबुल या पीके रोज नए अवतार में दिखे। छोटे कभी लंबे बाल ये बना ले, जो टीवी पे देखे सब खरीद डाले। तेल, क्रीम, शैम्पू या चाय, जो हीरो बोले जनाब वही लगाएं। फिर एक दिन सबने देखा कुछ ऐसा, बोले कॉपी कुमार, जहाँ हीरो ने बोला हम वहीं लगाएंगे पैसा। लुट गए शेयर, डूबा पैसा, बैंक बैलेंस हुआ जीरो। सब बोले क्यों भाई, अब क्या कहता है तेरा हीरो? सिर्फ किसी सेलिब्रिटी, ब्रांड एम्बेसडर या नामी व्यक्ति के मोह में आकर निवेश न करें। कंपनी पॉलिसी ठीक से समझें और अपना पैसा सोच समझ कर लगाएं। देर लगी पर कुमार ने सीखा सबक जैसे तैसे कि हीरो के कहने में आकर ना लगाएं पैसे। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। Welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों में, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन। Benchmark indices end flat amid selling in IT and select banking shares. Nifty finishes near 22,200. RBI asks NPCI to examine Paytm's request to become third-party app provider, and electricity rules amended to provide separate electricity connections for charging of electric vehicles. आईटी और बैंकिंग क्षेत्रों में बिकवाली से सेंसेक्स लगभग पूर्व स्तर पर बरकरार रहा। निफ्टी भी 22,200 के स्तर के आसपास दर्ज हुआ। रिजर्व बैंक ने एनपीसीआई से पेटीएम के लिए तीसरे सुविधा प्रदाता बनने के अनुरोध पर विचार करने को कहा और इलेक्ट्रिक वाहन के लिए अलग बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए बिजली नियमों में बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेंसेक्स से। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 15 अंक की मामूली गिरावट से 73,143 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 5 अंक के मामूली बदलाव से 22,213 के स्तर पर बंद हुआ। उतार चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र में बैंकिंग और आईटी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली रही। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.3% की बढ़त रही। वहीं बीएसई स्मॉल कैप सूचकांक भी 0.5% की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। Benchmark stock market indices ended flat in a volatile trade today amid selling in IT and select banking shares. The 30-share BSE Sensex slipped 15.44 points, 0.02% to close at 73,143. And Nifty was down 5 points or 0.02% to finish at 22,213. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index rose 0.25%, while the small-cap index gained 0.53%. In the Sensex pack of 30 companies, shares of 13 companies appreciated, while those of 17 declined. Bajaj Financial Services climbed 1.4%. Mahindra & Mahindra and Titan both gained 1.1%. Wipro rose 0.9%. On the other hand, HCL Tech declined 1.3% and Maruti Suzuki lost 1.2%. Asian Paints fell 1.1% and JSW Steel slipped 0.9%. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 11 sectors registered gains while 9 sectors declined. Telecom gained 1.5%. Industrial and BankX, both sectors rose 1.2%. Realty added 0.9%. On the other side, oil and gas declined 0.8%. Metal and BankX, both indices fell 0.3% each. The overall market breadth was positive as shares of
2,045 companies advanced, while those of 1,793 companies declined. A total of 98 companies remained unchanged. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 82.95 प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। उधर डॉलर इंडेक्स 103.9 के स्तर पर रहा। और कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं अर्थशास्त्री अश्विनी महाजन। अश्विनी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अश्विनी, किस तरह से आंकते हैं शेयर बाजार में आज की दशा के बारे में, क्योंकि तकरीबन जो बाजार है वो अगर हम सिर्फ सूचकांक सेंसेक्स की बात करें और निफ्टी की बात करें तो उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नज़र नहीं आया, लेकिन बहुत सारे अगर सेक्टर्स की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, खासतौर पे बैंकिंग और आईटी में। क्या खास वजह है? देखिए, कुल मिलाकर के मार्केट्स में एडजस्टमेंट्स होती रहती हैं, तो इसमें बहुत बड़ा विषय नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक साल से भी कम समय में 58,000 से 73,000 सेंसेक्स पहुंचा है, तो स्वाभाविक है उतार चढ़ाव रहेगा। लेकिन ख़ास बात हमारे शेयर बाज़ार के अभी जो उभरते हुए बात दिखाई दे रही है वो ये है कि एफपीआईज़ के आने या जाने से कोई विशेष प्रभाव अभी हमारे शेयर मार्केट्स पर नहीं पड़ता है, क्योंकि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी हद तक प्रभावी रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो फ्लैट हम समझ रहे हैं, जैसा कि बात आई भी कि बहुत अधिक जो है 2,000 से ज़्यादा शेयर्स जो हैं वो ऊपर गए हैं, मात्र 1,000 के आसपास जो हैं वो नीचे गए, तो कोई विशेष बात मैं इसमें नहीं समझ पा रहा हूँ। Ashwini ji, FIIs were the net buyers in the market today to the tune of 1,276 crore rupees. DIIs were also the net buyers, 177 crore rupees. And yet the market corrected only by 16 points in today's trade. What is this telling you about small investors who are participating in the market right now? And more importantly, what is the F&O market telling you about what's going to happen next week? Because right now this correction, minor correction, do you think the bull run will continue next week as well? You see, today the problem which we see today here is that the share market was not very much, not many number of domestic retail buyers were there. So generally it was led by the institutional investors. So it was subdued kind of a market today, as I find. What about the volumes? What is that telling you about the market right now? What about the F&O market? जो weekly F&O expiry होता है, monthly expiry होता है, that gives you some indication what's going to happen next week or for the month itself. You see, today only a few shares showed a volume, not many. So I don't see any trend over here, but I think bull down is going to continue. मतलब सोमवार को अगर जब अगला कारोबारी सत्र शुरुआत होगी तो बाजार वापस से अपनी मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्या ये मानने के पर्याप्त कारण हैं हमारे पास, या बाजार में अभी भी सधी हुई चाल चलने का ज़्यादा कारण है? क्योंकि अगर वैश्विक बाजारों की बात करें तो वहाँ से भी संकेत काफ़ी बेहतर हैं। आज सभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो हैं वो बेहतर हुए हैं। अधिकांश कोई 2.11% हुआ है, कोई 1, लेकिन सामान्य सभी बाज़ारों में जो दिखाई दे रहा है वो फ्लैट है। कुछ एक बाज़ार जो हैं वो तेज़ हुए हैं, और भविष्य में जिस प्रकार से डॉलर की स्थिति बनी हुई है पूरी दुनिया में, स्वाभाविक है ज़्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो भारत में आने के इच्छुक होंगे। Ashwini ji, what about the fourth quarter results for companies? How do you expect them to perform after 3 quarters of robust growth? Is there an expectation by investors who are buying into the market, including institutional, that they will have above average performance, which is why they're buying in advance to sell at gains? Demand is increasing. Generally, the consumer demand and investment demand, and the fact that government is also putting in a lot of money. So demand is no problem, and therefore there is no reason why companies should not perform well. Already we see GST figures booming, and all that indicates that markets are really getting
lot of more demand. So future is good, and all the foreign institutions, they are also expecting Indian GDP to continuously grow, and by 2027 it may reach $5 trillion. This is the latest news I have seen today. जी बिल्कुल, ये बहुत सकारात्मक और बहुत उत्साहजनक खबर है। लेकिन अगर हम चौथी तिमाही में, जिस तरह से अर्जुन ने पूछा, चौथी तिमाही में भारतीय कंपनियों के प्रदर्शन के बारे में बात करें, मुझे इस चर्चा को जारी रखना होगा, लेकिन उसके पहले लेना होगा एक ब्रेक। सुरक्षित सेवानिवृत्ति के साथ साथ एनपीएस आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने में भी मदद करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। अश्विनी जी, हम बात कर रहे थे भारतीय कंपनियों की चौथी तिमाही के नतीजों के बारे में। जो पिछली तिमाहियों का एक प्रदर्शन था, उससे काफ़ी उत्साह जगता था कि हमारी भारतीय कंपनियां के जो चौथी तिमाही के नतीजे होंगे वो काफ़ी उत्साहजनक होंगे। और जैसा आपने भी अभी बताया कि अगर हम जीएसटी कलेक्शंस के आंकड़ों को देखें या सरकारी जो कैपेक्स है उसके आंकड़ों को देखें, तो इससे काफ़ी हमारे को उम्मीदें जगती हैं कि कंपनी जगत का प्रदर्शन बहुत बेहतर होगा। क्या ये मानने की पर्याप्त वजह है कि इस सारी चीज़ों से कंपनियों जगत के जो प्रदर्शन होगा वो बेहतर ही होगा और उसका सीधा असर हमको शेयर बाजार पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा, जहां से भी अच्छी खबरें मिलने की पूरी उम्मीद होगी? देखिए, यदि शेयर बाज़ारों को देखें तो बूम साफ दिखाई देता है। यदि हम डिमांड को देखें तो बूम दिखाई देता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में देखें, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि को देखें तो बूम साफ दिखाई देता है। और कोई कारण नहीं है कि 3 तिमाहियों में लगातार बेहतर नतीजे आने के बाद हम चौथी तिमाही में कहीं पिछड़ेंगे, क्योंकि जो पीएमआई इंडेक्स है, जो बाकी जो सूचनाएं आ रही हैं वो सभी कंपनियों के बेहतर रिजल्ट्स की तरफ इंगित कर रही हैं। चलिए खबरों पे कुछ और नजर डालते हैं एशिया यूरोपीय बाजार पर। और एशिया बाजारों में आज आमतौर पर मिला जुला रुझान रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.6% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 1.2% और हांगकांग का हैंगसेंग मामूली गिरावट से बंद हुआ। जापान के शेयर बाजार में आज अवकाश रहा। उधर यूरोपीय शेयर बाजारों के शुरुआती रुझानों में मजबूती का दौर रहा। लंदन, जर्मनी और फ्रांस के शेयर सूचकांक 0.5% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। Moving on to the US stock market, the S&P 500 and the Dow Jones Industrial Average both surged to record closing highs yesterday, driven by a surge of investor interest in growth and technology stocks following Nvidia's exceptional earnings report. The S&P 500 recorded its most substantial daily increase in 13 months. Meanwhile, Nasdaq Composite recorded its largest single-day gain in a year, narrowly missing a record-setting close. Nasdaq Composite Index gained 2.96%, the S&P 500 rose 2.10%, and the Dow Jones Industrial Average soared 1.18% in the last trading session. What has led to this bull run in the US stock market? We're seeing Nvidia, which is looking at graphic user interface and, more importantly, artificial intelligence as a technology service provider. How do you see the US market right now, and what is its impact on India? See, as such, the technology is the driver of the growth today. Whether you're talking about US or you talk about India, so technology shares are bound to go up. And as the time passes by, you know, the traditional shares, they don't do well, but new companies, new technologies, they always take the shine. So as such, whatever happens in US, generally because of the fact that Indian economy is very much linked with the US economy,
So not clearly we can establish a link, but yes, what generally we see, if US market is booming, sooner or later it gives a better impact on Indian economy. But whenever they find better avenues in US, some FPIs may move to US, but ultimately they come back. What is your opinion about European markets, specifically Great Britain, because they're now into a technical recession with 2 consecutive quarters of negative growth, even though it is on a basis point only, between 0 and 0.50 basis points. What is your take? Inflation has come down from 7% to 4% there, but they're into a GDP recession. So what is that telling you about Western economies in Europe? Western economies are in a very bad shape. I keep on talking about these people, and with the UK economists as well. I generally see that it's very difficult for European economies to really come out of the recession. The reason being, they are into huge debt burden, most of the European economies, and most of that debt is the foreign exchange debt, and it's not just the domestic debt. And their government's fiscal situation is also very bad. So it is very difficult, because they have a very little scope of raising government expenditure, whether it's the consumption expenditure or the capex. So in India we have a lot of scope. So when we compare European economies with that of Indian economy, we have a lot of scope. Earlier it never happened, but now in the last 10 years we see huge increase in capex, for the reason that we have a kind of buffer which we can make use of. Our debt to GDP? Not debt to GDP per se, but if you see the debt to GDP ratio in India, it's constantly declining with respect to the central government. During COVID days it was 61%. I calculated it was 55% post this budget. So but this is not the case with the European economies, and I don't see any big reason for them to come out of the recession as you're talking about. Let's have a look at some more news. A global investment advisory firm, Jefferies, has projected an optimistic outlook for the Indian economy and its equity markets. In its latest note, the New York headquartered firm has said that in the last 10 years, India has seen fundamental structural reforms which have created the framework for the country to realize its full potential. It said over the next 4 years, India's GDP will likely touch $5 trillion US, making it the third largest economy by 2027. Overtaking Japan and Germany, maintaining the status of the fastest growing large economy. In the process of sustained economic growth, the global firm expects Indian stock market to hit $10 trillion US by 2030. Right now, it's about $4.7 trillion. As far as the market capitalization is concerned, GDP is not yet, it's trying to hit 4 trillion right now. What is it that the government is doing and needs to do in order for it to hit its target by 2027? See, it's the process started in 2018. We find that in 2018, that was for the first time that the government of India decided to protect the domestic industry by raising tariffs on the mobile phones, on electronics, on telecoms. And because of that, our domestic production of all these things started increasing, and the deficit with Chinese trade also started declining. And after 2018, we see a series of government policies coming out, and especially, Aapda Se Avsar. Like after COVID, we have changed the whole track of the policy making, and now we are not talking about the globalization. We are not talking about foreign capital much. What we are talking about is domestic production.
production in India, and that is really giving good results, and that's the reason why you see the companies doing good. Not just the big companies, even the smaller companies are doing better. So I think the Atmanirbhar Bharat policy is really giving good results. And another thing which our research team has found out, that our investments are increasing. ये चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर से हमें लेना होगा एक कमर्शियल ब्रेक। अच्छे रिटर्न के साथ साथ एनपीएस आपका आत्मसम्मान भी सुनिश्चित करता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक जरूरी है। कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का बदलता स्वरूप, जो अश्विनी जी जिस तरह से आपने बताया कि कोविड के बाद से जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो देखने का नज़रिया था वो पूरी तरह से बदला, और हमने एक अपना घरेलू उत्पादन इतना बड़े मात्रा में उसमें बनाने की बात करी। उसके साथ साथ जैसे कि सरकार ने कुछ और भी कहा था, उन्होंने स्टार्टअप शुरुआत करी। साथ ही साथ अभी जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं उसका कितना बता रहा था कि अब हमने 15 सेक्टर्स को चिन्हित किया। उसमें एपीआई था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, टेक्सटाइल, सोलर, सेमीकंडक्टर्स, टॉयज, व्हाट नॉट। एंड द रिजल्ट इज उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हम देख रहे हैं कि लगातार हर क्षेत्र में निवेश बढ़ा है। यहाँ केवल हम सरकारी निवेश की बात ना करें जी, जो निजी निवेश है, हमारी रिसर्च टीम ने हमें बताया है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो ऑटोमोबाइल क्षेत्र है, टेलीकॉम का क्षेत्र है, टेक्सटाइल का क्षेत्र है, हर क्षेत्र में एपीआई का क्षेत्र है, सब क्षेत्रों में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी है। गवर्नमेंट अभी आपने बजट में भी सुना होगा 11,11,000 करोड़ का 11,11,000 करोड़ तो है ही जी। लेकिन साथ ही साथ सरकार ने ये कहा कि हम इस साल कम बोरो करेंगे ताकि जो निजी क्षेत्र है वो ज़्यादा बोरो कर सके। यानी ये जो सोच है उसके कारण हमारे देश में जो लगातार निवेश बढ़ रहा है, आगे आने वाले समय में आप देखिएगा कि और ज़्यादा नई से नई कंपनियां आपको दिखाई देंगी। जो पुरानी कंपनियां हैं उनका विस्तार दिखाई देगा और उसका असर शेयर मार्केट पर पड़ना लाजमी है, ऐसा मुझे लगता है। Moving on to more news, considering that Paytm Payments Bank will not be able to accept further deposits into their customers' accounts post 15th of March, RBI today announced further steps to ensure seamless digital payments by the UPI customers using Paytm handle. In an official press release, RBI has informed that NPCI has been asked to examine the request made by 197 Communication Limited to become a third-party application provider to ensure continued UPI operation of the Paytm app. NPCI will have to further ensure that all @Paytm handles are migrated in a seamless manner from Paytm Payments Bank to a set of newly identified banks to avoid any disruption. For this purpose, NPCI may facilitate certification of 4 to 5 banks as payment service provider banks with demonstrated capabilities to process high volume UPI transactions. Additionally, for merchants using Paytm QR codes, 197 Communication Limited will be required to open settlement accounts with one or more payment service provider banks. RBI has clarified that no action is required by customers having UPI address or handle other than @Paytm. RBI has reiterated that the holders of FASTag and National Common Mobility Cards issued by Paytm Payments Bank may make alternative arrangements before March 15, 2024 to avoid any inconvenience. Similarly, customers having an underlying account or wallet with Paytm Payments Bank must make alternative arrangements with other banks well before March 15, 2024. In more news, consumers can now obtain separate electricity connections for charging their EVs. According to the amended Electricity Rights of Consumer Rules, time period for obtaining a new electricity connection has also been reduced. Under the new rules, time limit has been reduced from 7 days to 3 days in metropolitan areas, from 15 days to 7 days in other municipal areas, and from 30 days to 15 days in rural areas. The Power Ministry said in cases where consumers raise complaints about meter reading not aligning with their actual electricity consumption, the distribution licensee is now required to install an additional meter within 5 days from the date of receipt of the complaint.
Union Power and New and Renewable Energy Minister R.K. Singh said the amended rules will empower consumers and reduce the timeline for getting new electricity connections. He said new rules will simplify the process of setting up rooftop solar installations. अश्विनी, किस बारे में खास तौर पे मैं बहुत संक्षेप में जानना चाहूँगा कि जो बिजली में जो सुधार किया गया है, खास तौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो चार्जिंग के लिए अलग से जो मीटर लगाने का, इसका क्या उद्देश्य नज़र आता है और ये कितना इसको सुविधाजनक बनाएगा खास तौर पे उपभोक्ताओं के लिए? देखिए, अगर ईवी चार्जिंग के लिए अलग मीटर लगता है तो भविष्य में आप अपेक्षा रखिए कि उसमें कंसेशनल रेट्स भी होंगे। और क्योंकि अभी तो हमारा बहुत छोटा सा प्रतिशत है जो ईवी व्हीकल्स में हम शिफ्ट हुए हैं जी, लेकिन एक बहुत बड़ी मात्रा में जिस प्रकार से हमें इस समय क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने की बात है, जो ग्लोबल लेवल पर हमारी कमिटमेंट्स हैं उसके ऊपर, और कुल मिलाकर सरकार की जो नीति है उसको बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। केवल यही नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में जो ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगाने की बात सरकार ने इस बजट में की है उस पर भी इसका एक असर पड़ेगा। जी, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने व्यापक आर्थिक बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के साथ साथ सामाजिक कल्याण को भी सुनिश्चित किया है। श्री गोयल ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया सहित सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों से भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। Moving on to the crude oil market, in intraday trade, Brent crude futures were trading over 1% lower at $82.66 when reports last came in. US West Texas Intermediate crude futures saw a decline of over 1% to trade at $77.57 when reports last came in. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल के वायदा कारोबार में सोना 30 रुपए की मामूली बढ़त से 62,006 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। हालांकि चांदी 135 रुपए के नुकसान से 70,134 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर रही। वैश्विक बाजारों में सोना बढ़त से $2,032.30 प्रति औंस पे रहा, जबकि चांदी गिरावट से $22.95 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। अश्विनी, कार्यक्रम में शामिल होने और चर्चा के लिए धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark indices and flat amid selling in IT and select banking shares. Nifty finishes near 22,200. RBI asks NPCI to examine Paytm's request to become third-party app provider. And electricity rules amended to provide separate electricity connections for charging of electric vehicles. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. कॉपीपुर गांव के कॉपी कुमार, कॉपी करने का वे इनको बुखार। बादशाह, शहनशाह, चुलबुल या पीके रोज नए अवतार में दिखे। छोटे कभी लंबे बाल ये बना ले, जो टीवी पे देखे सब खरीद डाले। तेल, क्रीम, शैम्पू या चाय, जो हीरो बोले जनाब वही लगाएं। फिर एक दिन सबने देखा कुछ ऐसा, बोले कॉपी कुमार, जहाँ हीरो ने बोला हम वहीं लगाएंगे पैसा। लुट गए शेयर, डूबा पैसा, बैंक बैलेंस हुआ जीरो। सब बोले क्यों भाई, अब क्या कहता है तेरा हीरो? सिर्फ किसी सेलिब्रिटी, ब्रांड एम्बेसडर या नामी व्यक्ति के मोह में आकर निवेश न करें। कंपनी पॉलिसी ठीक से समझें और अपना पैसा सोच समझ कर लगाएं। देर लगी पर कुमार ने सीखा सबक जैसे तैसे कि हीरो के कहने में आकर ना लगाएं पैसे। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। आपकी आजादी के साथ साथ एनपीएस आपके आत्मसम्मान का भी ख्याल रखता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। This program is sponsored by IEPFA, Informed Investor, Empowered Investor, Smart Investor. इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।